Welcome back. Prime Minister Narendra Modi is in Russia for that all-important first bilateral meeting with the Russian president since taking over as the Prime Minister of India in the third term. The meeting is currently underway. Times Now has learned that on Ukraine war, Prime Minister Narendra Modi has told Putin once again that this is not the era of war and solutions are not to be found on battlefields. Listen into that interaction that happened a while ago. Была возможность вчера неформально практически поговорить по всем вопросам. कल अनौपचारिक माहौल में हमको बहुत मामलों पर चर्चा करने का मौका मिला। которые выделили जो बहुत संवेदनशील मामले होते हैं, जो ज्ञान जो देते हैं, तो मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и правительству конечно переселения. जो यूक्रेन सरकार का हाल निकालने के लिए आप कोशिश करते हैं, इसलिए आपका बहुत आभारी हूँ। Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमसे उम्मीद है कि आप ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो अक्टूबर में कज़ान शहर में होने वाले हैं, आपका स्वागत करने हम आशुलित हैं। В деле развития Индии, индийского государства. भारत की विकास में मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। Мы с вами знакомы давно. Я знаю, что вся ваша жизнь посвящена идее реализации, идее укрепления индийского государства и улучшения жизни индийского народа. हम एक दूसरे को बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपका जीवन भारत के विकास को समर्पित है। Позвольте пожелать вам успеха. मैं फिर से आपको हर एक सफलता की कामना करता हूँ। एक्सेलेंसी और मेरे मित्र, मैं आपका इस भव्य स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव में अभूतपूर्व विजय भारत में हमें मिला और उसके बाद आपने जो शुभकामनाएं दी उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मार्च महीने में आपका भी चुनाव में भव्य विजय हुआ। मेरी तरफ से फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Ваше превосходительство, мой дорогой друг, позвольте поблагодарить вас за радушное гостеприимство, за уважение. Хотел бы вас также поблагодарить за ваши дружеские слова и ваши пожелания по поводу беспрецедентных успехов в недавних выборах в Индии. В марте в России были президентские выборы. Я хотел бы вас еще раз поздравить с вашей блестящей победой. पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। Ваше превосходительство, в течение последних 40-50 лет Индия терпит терроризм и страдает от терроризма. Насколько он страшен, мы это ощущаем на себя. В такое время произошли террористические акты в Москве и затем в Дагестане. Поэтому я могу себе представить, какую боль вы ощущаете после этих террористических актов, и поэтому мы решительно осуждаем все виды терроризма. एक्सेलेंसी लगभग 2.5 दशक से मेरा रूस के साथ नाता जुड़ा है। आपके साथ भी करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले और पिछले 25 साल में हमारी बायलैटरल मीटिंग करीब 22 हुई।
यानी ये अपने आप में, और जो मेरी मॉस्को की 6ठी यात्रा है रशिया की, तो ये अपने आप में हमारे संबंधों की गहराई दिखाता है. Ваше превосходительство, у меня глубокие связи с Россией и лично с вами в течение последних 2,5 десятилетий. И мы с вами встретились 17 раз в течение последних 10 лет. Это мой 6-й по счету визит в Россию, и мы сегодня участвуем в 22-м двустороннем саммите. И вот все это говорит о глубине наших отношений, нашего тесного сотрудничества. और मैं बिना Говорит о глубине наших отношений, нашего тесного сотрудничества. और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा, और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे. Я могу с уверенностью сказать, и опираясь на наш прошлый опыт, что мы вместе будем работать и в будущем, будем укреплять наше сотрудничество и углублять все аспекты нашего сотрудничества, и мы будем достигать новых целей. गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे, और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा. पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जाति के लिए बहुत संकट पैदा किए. तनाव रहा, संघर्ष रहा, और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया. फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे, और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है. और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं. आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे. Ваше превосходительство, последние 5 лет для всего мира, для всех стран мира были весьма сложными, были разные конфликты, были разные кризисы. Сначала ковид создавал трудности для всего мира и человечества, затем пришли разные конфликты, разные разногласия, и поэтому человечество оказалось в таком трудном положении. И в такое время, благодаря индийско-российской дружбе, когда мир сталкивался с разными кризисами в сфере продовольственной безопасности, в сфере топлива, в сфере удобрений, именно благодаря нашей с вами дружбе мы избежали всех трудностей для индийских фермеров. И мы удовлетворили все их потребности в удобрении. И в этом особая роль нашей с вами дружбы. И мы полностью привержены защищать интересы индийских фермеров, благодаря и используя наше с вами сотрудничество, мы будем и дальше работать в этом направлении и будем только укреплять наше сотрудничество. एक्सेलेंसी, फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी. ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल, डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए. इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है.
Весь мир сталкивается с кризисом в сфере топлива и энергии, но благодаря нашему сотрудничеству мы смогли избежать всяких трудностей для простых граждан Индии. Мы обеспечивали бензином, дизельным топливом и так далее. Поэтому весь мир должен признать, что благодаря индийско-российскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечивали стабильность на мировом рынке. दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। Я могу с уверенностью сказать, и опираясь на наш прошлый опыт, что мы вместе будем работать и в будущем, будем укреплять наше сотрудничество и углублять все аспекты нашего сотрудничества, и мы будем достигать новых целей. गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जाति के लिए बहुत संकट पैदा किए, तनाव रहा, संघर्ष रहा। और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। Ваше превосходительство, последние 5 лет для всего мира, для всех стран мира были весьма сложными, были разные конфликты, были разные кризисы. Сначала ковид создавал трудности для всего мира и человечества, затем пришли разные конфликты, разные разногласия, и поэтому человечество оказалось в таком трудном положении. И в такое время, благодаря индийско-российской дружбе, когда мир сталкивался с разными кризисами в сфере продовольственной безопасности, в сфере топлива, в сфере удобрений, именно благодаря нашей с вами дружбе мы избежали всех трудностей для индийских фермеров. И мы удовлетворили все их потребности в удобрении. И в этом особая роль нашей с вами дружбы. И мы полностью привержены защищать интересы индийских фермеров. A detailed discussion between two very significant global leaders there. Prime Minister talking about everything from trade to terror to ties. But Srinjoy, tell me how significant it is that when Zelensky has tweeted about Modi's visit to Putin at a time when a hospital, a children's hospital, was bombed, Prime Minister says that he has had a detailed discussion with Putin. When children die, it is heart-wrenching. Well, he's made his point very clear. He has met Zelensky a little while ago. He has met Putin. And even here, he has spoken about the war. He has spoken about the cost of the war, not just for the people of Ukraine, but also for the entire South. He spoke about the
the 3 F's. Food prices have gone up across the world, fertilizer prices and fuel prices. And he said that because of this relationship between Russia and India, at least the people of India, the farmers of India, and considering the election results, when the rural vote sort of slipped away from the BJP to an extent, he tried to make it clear that this friendship with Russia ensured enough diesel and enough fertilizers for the farmers of India. He made a domestic point when he was speaking. But as far as the war is concerned, once again, he made it very clear that the war had to end. He has been saying this again and again. 3 years ago, he made it clear that the war is not something that you see in the 21st century. Now he's making it clear again that India is against the war, he is against the war, there should be peace immediately, and there should be discussions and negotiations. Very pointedly, he also spoke about anti-terror, and that is something Russia has been very supportive of, because India has got Russia's support when it comes to issues in the UN Security Council. And once again, on that issue, he told Mr. Putin, he told all of Russia that India is grateful to Russia for all the support Russia gives to India when it comes to issues that relate to terror. Of course, we know about President Zelensky's statement. We know what has happened, the deaths of 20 children in a missile strike. Prime Minister has also met President Zelensky not very long ago, and India is making it very clear that India wants peace. Right, India is standing its ground. It is not allying with any one particular side as used to happen earlier. We have just a year ago seen visuals when Prime Minister met Zelensky, and today you see those visuals of him meeting President Putin in Russia. Thank you, Sanjay, for joining us. We take a very quick break.